Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical analysis. So in yesterday's session, we saw that Nifty has consolidated the range and we closed marginally lower by 10 points. So what we believe is like in the Nifty on the higher side, 17,800, which has been the resistance for the last couple of days, is acting a very strong resistance. So with the global market, there can be slightly negative opening in the morning. So, but we believe that on the lower side, 17,400 to 17,000 are the lower side range where again the buying might come in. So largely with the global market, even the SGX is somewhat like 190 points down. So there can be little bit pressure in the morning, but then again at lower 17,400 or maybe 17,000, there will be again the buying should come in. And if we talk specifically for the Bank Nifty yesterday we were expecting above once it trades above 40,000 level, we were expecting some amount of short coverage. So exactly it made a high. It 40,000 was retested during the day, and but then again some profit booking came during the day, which dragged it lower. So largely, the bank Nifty continues to remain outperformer in the market. But having said this, we believe that the focus should be more on the individual stocks, sector specific. Like yesterday, we saw some good amount of buying in cement and metal space. ACC and Ambuja in cement, and Jindal Steel, SAIL and Tata Steel in the metal space. So and even to some extent, power stock, Tata Power was something which was very positive in yesterday's session. So largely, we believe that this is a market where the individual stocks will be trading. Index wise, we need to understand 17,800 level on the Nifty has to be taken out very strongly, and 40,000 levels on the Bank Nifty. So whenever these triggers are activated, then we may see the further continuation in the index. On a cautious note, we will look at the VIX. VIX is 19.53. So for the last couple of days, this has been a high side range. Whenever if it's already entered into a volatility zone, so VIX climbing close to 20 levels will be further the volatility will increase in the market. The cooling off will only be seen when it trades below 18 level. So VIX is at the higher side, so volatility will be there. Coming to the FI data, FIs were again they initiated a short position in the market, so which they have been maintaining for the last couple of days. So the net long short ratio is close to 19%, and yesterday they are added shorts by 11,000 contracts, and in net they are short by 83,000 contracts. This is for the Nifty index future. So they are maintaining a short position index, which is one of the cautious view why we are taking a cautious view of the market. More or less, it is a range bound market. Stock specific activity should be done. We are initiating a derivatives call for the day in the Tata Steel. We are recommending a 108 call option buy in the range of 4.7 to 5. The stop loss would be 2.9 for the target of 8.75. That's all from technical. Over to Bhavesh. Yeah, hi, good morning all. So, two or three news. First with auto. In auto space, in the month of August, Hero Electric has recorded highest sales at 10,500 vehicles. This was followed by Okinawa Autotech. So Hero Electric continues to be leader in electric vehicles. But simultaneously, Ether Energy has reportedly raised $200 million for further expansion, and it had generated 100 crores a month of revenue in this year. Now they are aiming to double that in FY23. So on a very small base, they are looking forward to grow very fast. So electric vehicles, electric scooters at least is picking up in a very big way. Secondly, update on aluminum. So aluminum, there is a smelter Durkan Q in Europe with a capacity of only 0.2 million ton. So there will be production cut because of energy crisis that is happening in Europe, and this will be across many companies, which will include metals, chemicals, etc.
But as far as this company's production is too small to be having any major impact on global aluminum prices. But overall, the Europe as a percentage of total world aluminum production is around 7%. So that if I think more or less you might have a sharp production cut where we might have most of the European smelters shutting operations, because if this war, Ukraine Russia war continues, energy crisis continues, so that will have a positive impact on aluminum, and beneficiaries could be Hindalco and Nalco. But having said that, it is also to be remembered that we are going to have a bad times in Europe. So Europe will be in recession. There is a possibility of even US to be in recession. So not necessarily that aluminum prices might continue to go up. The sentiment will remain very weak, and so it is a very tricky call as of now to whether to invest in Hindalco Nalco even at these levels. So lastly, an update on Exide Industries. So Exide is trying to ramp up its exports. This is mainly because uh, in the future they see that they have to diversify significantly towards export, because domestic market will see a lot of electric vehicles. Even if they plan to participate in batteries for electric vehicles, but some of the companies like Maruti may start making their own batteries. So in order to maintain sales, they're trying to diversify towards more and more towards export side. So as of now, the valuation is too cheap, and that's why we have a buy rating. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates. The Fed has entered into an exclusive agreement, teaming agreement with LD's Paradise. This is Czech Republic fund, and they are intended to provide turnkey antidote systems for the civilian airports in India. Secondly, if you see then in Interglobe Aviation, their new CEO Pete Elvers took charge on Tuesday, and this person has spent 3 decades at KLM and Royal Dutch Airlines, and he would be replaced by Ronjay Datta at the top post. HDFC Bank, the private sector lender, sold additional Tier 1 AT1 bonds worth rupees 3,000 crore at a cutoff rate of 7.84%. This will be the lowest rate shelled out by the bank so far in 23. And this Tuesday's bond sale also marks the first time the private bank has tapped the debt capital market issuing AT1 bonds. And lastly, on Kaltaru Power, transmission has won an order of 1345 crores for its transmission distribution business, and this has also backed in pipeline laying work orders in JV in consortium with Metro Rail Electrification in India for it. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, Jitendra. Good morning, team. There are multiple things happening globally which we need to be very mindful. The bond yields have been going up. Now there is a gas non-availability in Europe, which is pushing gas prices higher, whereas crude prices has come to $91. I'm talking about Brent crude. So no, that is something positive for India, but many commodity or products are not available in Europe. So we have an opportunity, but demand also has come down. So no, we need to balance between both. Crude coming down and your GRMs rising is positive for oil marketing companies. Even for pure refineries like MRPL, Chennai Petro. But we are not positive on oil companies. They are very volatile. So there can be a trade, for 1, 2, or 3 days. You have to trade in and trade out. That's all. We should not be stuck up there. Crude coming down is very positive for many user industry in chemical companies, in tire companies. Even rubber prices have come down. Rubber prices have hit 23 months low, and with crude coming down, tire companies are going to be a major beneficiary. Companies like Asian Paints, Asian Paints, Berger Paint, they will benefit. Pidilite will benefit. These are companies where their raw materials come from crude derivative. So these will start to benefit. So we need to look at these also. NCLT review meeting are in final stages.
So 8th September, that is tomorrow, no, in Chandigarh, there is a meeting for merger of IB Real Estate and Embassy Group. So post merger, it will become Embassy Group, and IB Real Estate has huge real estate in land bank in Mumbai, and even huge rental. The only problem is management. So if no, Embassy Group takes over, it will be a big re-rating, and the stock can give very good return. So no, at 80, 90 rupees, it is a value buy. But we need to know whether the merger can go through. That is an important catch. If the merger goes through, this stock will be re-rated. Metro brand has sent a discount voucher to all shareholders with 15% discount as a token of love and appreciation for being the shareholder. Dream Float Services. Now, your new stock was listed yesterday. Now, the listing price was very heavy. Now, after that, it closed at 462. The issue price is 326. Now, it is a dominant player in airport lounges service. Now, 95% market share is there, but they have two international players competing with them. So, no, it is not an easy business, but it is an asset-light model. No, they don't run the service. They are a service provider. So, no, I think it is a very good asset-light business model, but no, they need to scale up for this valuation. So, no, I don't think any upside is there in the short term. Maybe a long-term investor can look at it. Biocon sells 5.4% stake in Syngene International for 1,220 crores, which is positive for Biocon because they are collecting some cash. Paytm said loan disbursement and business registered 246% year-on-year growth. So they have their loan book has slightly increased, but the data says very good, but I don't think that will convert into profit. Blue Star bags 2 orders worth 390 crores from Bangalore Metro. Kalpattur Power Transmission foreign unit wins order worth 1,345 crores. Indigo will focus on people and profitability, said new CEO Peter Elber, who assumed office on Tuesday. Report indicates that Indigo fared poorly on on-time performance. Now it is about 80%, lagging other private carrier. See, when it comes to on-time, Indigo has been so good for a very long time. But in the last 6 months, people are not working for Indigo. There are flash strike, there are many things which are happening. So their on-time performance is very bad. Let us see whether the new CEO can turn around. Suzlon has bagged 180.6 megawatt energy project from Sembor Corp for green infra wind energy. But we need to understand, they have pledged almost 9 to 10% of their equity with Adani Group. So there are talks in the market that Adani can take the thing. So today there can be some correction in market. That would be an opportunity to buy SBI Life, Bank of Baroda, even Federal Bank. If it corrects, it will be an opportunity to buy. So you need to look at opportunities. Even ABB, if it corrects 8 to 10%, it'd be a good chance to buy. Blue Dart is one more company because crude prices coming down will benefit companies which are in few transportation also. So with that, over to you, Sitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग इसका also एक बार हिंदी में देख लेते हैं. एक्साइड इंडस्ट्री जो है वो अभी देख रही है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो रैंप अप करने के लिए और उससे जो इंक्रीजिंग उनका जो पेनिट्रेशन है जो उनकी जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज है उसमें और वो अभी एक्सप्लोर करेंगे जो न्यू मार्केट है उसमें. तो ये पॉजिटिव है और जो उसका जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो चीप है तो पॉजिटिव रहेगा ये वैल्यूएशन पे. नेक्स्ट अपडेट है जो अभी एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है उसमें एक डनकर करके एक है उसमें एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है एनुअल वो 0.2 मिलियन टन है तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. और इसके अलावा जापान में जो एनुअल प्रोडक्शन है जो 2021 का था वो 0.7 मिलियन टन है.
चाइना में टॉप एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है 39 मिलियन टन, और जो वर्ल्ड का जो ओवरऑल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो 68 मिलियन टन है। तो अभी जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर चलते हुए बहुत सारे ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका ये बेनिफिट एल्यूमिनियम जैसे कंपनीज को रहेगा, जैसे उसमें हिंडाल्को और नाल्को है, बट ये सेंटिमेंटली लाइक इतना पॉजिटिव नहीं है, वीक ही है, तो ये एक ट्रिकी कॉल रहेगा, तो एक वेट एंड वॉच जैसा देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अपडेट है ऑटो के ऊपर। जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा आया था वाहन से, तो उसमें हीरो इलेक्ट्रिक ऑलरेडी लीडर है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में। कंपनी ने अराउंड रिकॉर्ड हाई और हाईएस्ट अगर अभी तक का 1 मंथ में सेल किया है वो 10,476 व्हीकल्स है। उसके बाद जो कंपनी वो ओकिनोवा है, जो उन्होंने 8,554 व्हीकल सेल किए हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर एथर एनर्जी है, वो उन्होंने बोला है कि वो रेस करेंगी $250 मिलियन न्यू फंडिंग राउंड से, और जो ये फंड है वो यूज होगा एथर का एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करने के लिए, और कंपनी जो ये अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो रिटेल नेटवर्क है ग्रो करने के लिए। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उनका इंक्रीज जो अभी कैपेसिटी है वो 10,000 पर मंथ है, तो वो आगे जाके 35,000 पर मंथ करेंगे दिस ईयर में। और कंपनी अभी जनरेट कर रही है रेवेन्यू 100 करोड़ है मंथ में, तो उनका कंपनी का एम है कि वो डबल करेंगे नंबर्स फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ये अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट है HDFC बैंक है, उन्होंने कल एडिशनल टायर 181 बॉन्ड जो है वो 3,000 करोड़ में सोल किया है, और उसका जो कट ऑफ रेट था वो 7.84% था। तो ये जो लोएस्ट शेल हुआ है जो अदर बैंक है उससे कंपैरेटिव में। सो ट्यूसडे में जो ये बॉन्ड सेल मार्केट था, फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक ने टेप किया है टैप कैपिटल मार्केट में। और नेक्स्ट अपडेट है इंडिगो के ऊपर। इंडिगो के जो सीईओ है उन्होंने कल से चार्ज लिया हुआ है, और जो पीटर एल्बर्स है न्यू सीईओ है, और ये उन्होंने 3 डिकेट्स KLM रॉयल डच एयरलाइंस में निकाली है। और अभी उन्होंने बोला है कि इंडिगो के जो बहुत सारे इंडिगो के ऊपर ये भी है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय वो पहले अच्छे से थे, अभी बहुत सारे उसमें इशू आ रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो काम नहीं, मतलब ऐसे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ये देखने जैसा हुआ कि सीईओ कुछ अच्छी डेवलपमेंट लाता है तो सीईओ कंपनी को टर्न अराउंड करता है कि नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट है सुजलॉन के ऊपर। जो सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो उन्होंने बोला है कि उनको कल एक ऑर्डर मिला है जो सेटअप करेंगी 180.6 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, जो उनको मिला है ये ऑर्डर सेमरॉक आर्म जनरल इंफ्रा वाइंड एनर्जी से, और जो उनका प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कमीशन होगा 2024 में। बट ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी 9 to 10% प्लेज इक्विटी है अदानी के पास, तो बेसिक न्यूज आ रही है कि अदानी टेक ओवर कर सकता है, तो ये एक थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी। नेक्स्ट अपडेट है पारस डिफेंस के ऊपर। कंपनी ने बोला है कि जो उनका एक्सक्लूसिव एंटर करने वाली है एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट में, जो इलीड्स करके है उसमें क्रेज रिपब्लिक में, और वो प्रोवाइड करेंगी एंटी ड्रोन सिस्टम सिविल एयरपोर्ट्स के लिए इंडिया में। देन कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन है, उनको एक ऑर्डर मिला है और जो वैल्यू है वो 1,345 करोड़ है, और ये जो स्पेशलाइजिंग इंजीनियरिंग है, प्रोक्यूरमेंट है और कंस्ट्रक्शन है, तो उनसे ये ऑर्डर मिला है इंडिया में। और जो उनका ओवरसीज मार्केट है और उनका जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो भी है। ये जो अपडेट है स्टॉक एक्सचेंज पे आई थी। नेक्स्ट अपडेट है कि बहुत सारे मल्टीपल ग्लोबल थिंग्स चल रहे हैं, जैसे कि बॉन्ड यील्ड अभी ऊपर है बहुत ही। देन गैस की जो यूरोप में है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। ब्रेंट क्रूड है वो 91 रुपीज है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो डाउन हो रही है, जो GRM में अप हो रहा है, तो उससे पॉजिटिव होगा ये ऑयल इंडियन जो मेकिंग कंपनीज है उनके लिए। तो आप ये कंपनी में 1, 2 और 3 डेज के लिए ट्रेड इन और ट्रेड आउट कर सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स में कुछ भी अपडेट आता है तो ये स्टॉक्स वोलेटाइल रहते हैं। तो MRPL और चेन्नई पेट्रो आप व्यू लेके 1 और 2 डेज के लिए ट्रेड इन और ट्रेड आउट कर सकते हो। और जो ये अभी क्रूड ऑयल की प्राइस जो नीचे जा रही है और जो GRM अप हो रहा है उसके कारण जो रबर के प्राइसेस है वो भी लो है। जो टायर
मेकिंग कंपनीज है उनके लिए भी बेनिफिशियरी है, पेंट सेक्टर के लिए भी बेनिफिशियरी है। तो पेंट में एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है और उसके अलावा पिडिलाइट के लिए भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपडेट है एनसीएलटी है, उनकी कल 8 सितंबर को चंडीगढ़ में मर्जर के लिए बैठक है, वो आईबी रियल एस्टेट एंड एम्बेसी के ग्रुप में। तो एम्बेसी ग्रुप में टेक ओवर किया तो कंपनी आईबी रियल एस्टेट को रीरेटेड होगा और ये रेटिंग शायद गुड हो सकता है, तो ये वॉच आउट करने जैसा होगा। कल ड्रीम फॉर सर्विसेज का लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग की जो इशू प्राइस थी 326 थी और लिस्टिंग प्राइस जाके हाई अच्छे से सेटअप हुई थी मॉर्निंग में, और जो उसका क्लोजिंग है 426 में है। इनके 2 इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स है, तो उनको जो स्केल अप है वो वैल्यूएशन वाइज ज्यादा करना पड़ेगा, और ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो, पर शॉर्ट टर्म इसमें इतना कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। देन बायोकॉनिकल, उनका जो सिंजिन में स्टेक था अराउंड कुछ 4% वो सेल किया है। देन ब्लू डॉट को भी एक कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देन पेटीएम ने बोला है कि ईयर ऑन ईयर 246% बिजनेस डिस्बर्समेंट जो उनका लोन है उसमें ग्रोथ देखी गई है, तो डेटा काफी अच्छा दिखा रहा है ये लोन और ओवरऑल जो नंबर्स है वो पेटीएम के लिए, बट ये डिफिकल्ट है कि वो प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होगा उसके लिए, तो पेटीएम हम लोग अवॉइड ही बोलते हैं। सो आप आज देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे खुल सकता है और करेक्शन हो सकता है मार्केट में, तो ये करेक्शन को आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और इसमें आप एसबीआई लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एबीबी, ब्लू डार्ट ऐसे स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.